Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone. What's up guys, welcome to GFM, the house of premium recipes. मेरा नाम है कुणाल और आज मैं एक ढाबा स्टाइल रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, सोया चाप मसाला। Made me complete, you changed my life, made me believe in real love, and now my heart. सो गाइस, हमारा पहला स्टेप है कि हम चाप को कट करके फ्राई करेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़े से मसाले डाल के उसको मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So excited 'cause you're so right. Now I'm never leaving your side, 'cause you're mine, 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 mine. Now I'm never leaving your side, 'cause you're mine. And takes your heart so suddenly. Sometimes someone just becomes a part of you so easily. सो गाइस, अब हम इस चाप को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे साइड में फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। तब तक हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। Made me believe in real love, and now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited 'cause you're so right. Now I'm never leaving your side, 'cause you're mine, 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 mine. Now I'm never leaving your side, 'cause you're mine. सो गाइस, ये थी मेरी सोया चाप मसाला की रेसिपी ढाबा स्टाइल में। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी है तो प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।